So we are starting off with question number 123. All right, question number 123 जो है वो एक circuit breaker का example दे रहा है. So in figure 7.1 shows the structure of a circuit breaker that uses electromagnet. The circuit breaker operates when the current is 10 amperes. Now circuit breakers क्या होते हैं? सबके घर पे लगे होते हैं, ट्रिप होते रहते हैं, फिर आप ऊपर करते हो सही हो जाता है. ये क्या सिनेरियो क्या हुआ? What's the use of a circuit breaker? वोल्टेज नहीं, हाई करंट. यस, पहले जो है सर्किट ब्रेकर्स नहीं होते थे, पहले जो है वो यू हैड फ्यूजेस. नाउ द प्रॉब्लम विद फ्यूजेस वाज दैट अ फ्यूज वाज इफ इट ब्रेक्स यू नीड टू रिप्लेस इट. सही है, मतलब आपको जो है वो आपके पास एक फ्यूज़ होना चाहिए. आप जो है वो पुराने फ्यूज़ को निकालेंगे जो ख़राब हो गया और फिर नया फ्यूज़ जो है वो इंस्टॉल करेंगे एंड देन फाइनली इट वर्क्स. या सही है. नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज इट्स वेरी इनकन्वीनियंट इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्यूज़ अवेलेबल, इफ़ यू डोंट हैव द सेम टाइप ऑफ फ्यूज़ अवेलेबल, या इस तरह के मसले मसाइल. ठीक है, विद सर्किट ब्रेकर बिकम्स वेरी ईजी. आपने खाली स्विच की तरह उसको वापस ऊपर करना है एंड देन यू आर गुड टू गो. सही है. सो नाउ यू डोंट फाइंड एनी मोर फ्यूजेस. बहुत रेयर जगहों पे ऐसा होता है कि यू फाइंड फ्यूजेस. अब ज़्यादातर जगहों पे जो है वो क्या होता है, यू हैव अ सर्किट ब्रेकर नाउ. तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दिस सर्किट ब्रेकर? Essentially, so this bar right here is going to behave like a solenoid, and if a sufficient amount of current is going to pass, ये आयरन बार को क्या करेगा? इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट द आयरन बार एंड पुल इट अप. जब वो आयरन बार को ऊपर खींच लेगा तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? द कॉन्टैक्ट ब्रेक्स एंड जो करंट आउट है फिर वो करंट आउट नहीं होगा, एंड दैट्स एसेंशियली हाउ यू स्टॉप द करंट फ्रॉम फ्लोइंग इन केस ऑफ अ वेरी हाई सर्ज ऑफ अ करंट. ऑलराइट, तो खैर on figure 7.1 mark with an arrow the force on the iron bar caused by the electromagnet. वो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं कि it's gonna be upwards. क्योंकि it's a pivot तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब फोर्स upwards लगेगा तो what's going to happen? ये कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे? These are gonna break, and contacts break हो जाएंगे. No more current is gonna be able to flow. So that's essentially what it is. Suggest one reason why the iron bar does not move when the current is less than 10 amperes. The magnetic field is not strong enough to attract the current. सही है. So हम ये लिख देंगे कि magnetic field of the solenoid is not strong enough to attract the iron bar. So the magnetic field is not strong enough to do what? Not strong enough to attract the iron bar. When the current is greater than 10 amperes, the circuit breaker stops the current. Explain what happens in the circuit breaker when this occurs. So this is 3 points. Alright. So number 1, when current becomes greater than 10 amperes, क्या होगा? The magnetic field becomes very strong. It attracts the iron bar. The iron bar moves up, breaks the contact, and stops the current from flowing. So what are we going to write down? At 10 amperes, the magnetic field is strong enough to pull the iron bar upwards. So the magnetic field is strong enough to pull the iron bar upwards, and then we are going to say that because the iron bar has been pulled upwards, breaks the contacts and stops the current from flowing. So breaks the contacts and stops the electrons or stops the current from flowing. ठीक है? Is this clear? Yeah, कोई problem? All right. State and explain how the electromagnet can be altered so that the circuit breaker stops the current at less than 10 amperes. तो very simple. क्या यूज़ कर सकते हैं?
greater number of turns. Number So you're gonna have greater number of turns, automatically it's going to produce a stronger magnetic field, and hence it's going to pull the contacts earlier. Second, thickness of the iron bar. So जो iron bar का weight है वो आप क्या कर देंगे, वो आप कम कर देंगे, सही है. So reduce या decrease the mass of the iron bar. Sahi ji, so these are the two changes you can make to reduce or to make sure that your electromagnet is able to pull it at a lesser current. ठीक है, ये कहानी clear है बेटा? Any problems? Next question. So this right here is which? So again, ये जो तस्वीर दिखाई हुई है इसमें हाथ कौन सा है? Which hand is it? It's a left hand rule. सही है, तो यहाँ पे left hand rule मतलब current on a force on a current carrying conductor. So force on a current carrying conductor का इससे कोई ताल्लुक है? So हो सकता है आगे DC motors आ जाए, we don't know. सही है, बट हमें ये पता है कि ये लॉरेंस फोर्स का जो है वो आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो वी आर गोइंग टू ट्रीट इट अकॉर्डिंगली. So a wire carrying a current in a magnetic field experiences a force due to the current. On figure 8.1, insert the words current, field and force in the boxes to show the relative directions of the current, the magnetic field and the force. ठीक है, what's the thumb? Thumb क्या होता है left hand rule में? Direction of force. The thumb is direction of the force. The index finger is the direction of the magnetic field. And the middle finger is current. Sorry, come again. ऊपर magnetic field नहीं given है क्या? बस field दिया हुआ तो it is magnetic field, right? No, that's fine. So आगे हमारे पास आ गया DC motors. बेटा. So now we have DC motors. Figure 8.2 shows a current carrying coil ABCD in a magnetic field. Each side of the coil is 4 centimeters in length. So it's a square coil. चाहिए ना, ये जो coil है इनकी सारी sides जो है वो कितनी है? That's 4 centimeters in length. The force on AB is 20 newtons and the force on CD is 20 newtons. So it's going to produce a turning effect of 20 newtons each. Calculate the total moment caused by these forces. Now मुझे ये बताओ कि यार अगर ये लेंथ जो है वो कितनी है? दिस लेंथ राइट हियर शुड बी 4 सेंटीमीटर्स. द क्वेश्चन सेज कि कॉइल की सारी साइड्स जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर्स. व्हाट सो दिस इज यूनिट 1. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स? ना. Moment is equals to force into the perpendicular distance between the force and the center of rotation. So in this case इन दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर्स. इन दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? एंड दोनों का डायरेक्शन सेम है फोर्सेस का. सॉरी, दोनों के फोर्सेस का डायरेक्शन सेम नहीं है, बट मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? सेम होगा. जो ऊपर वाला 20, सो लेट्स कॉल दिस फोर्स x एंड लेट्स कॉल दिस फोर्स y. फोर्स x का जो मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा? इट्स गोना बी क्लॉकवाइज. एंड y जो है वो भी क्या होगा? वो भी क्लॉकवाइज है. So वो सेम डायरेक्शन है ना, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो सेम डायरेक्शन होगा. दिस राइट हियर इज गोना बी क्लॉकवाइज एज वेल. दिस राइट हियर इज गोना बी क्लॉकवाइज एज वेल. सो या तो फिर आप फोर्स ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो विद 0.2, नहीं 0.02, या तो फिर दोनों अलग अलग मोमेंट्स निकाल रहे हैं. सो मोमेंट ऑफ फोर्स x जो है वो कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस. अब डिस्टेंस जिसने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स लिखा वो फंस जाएगा. क्यों? क्योंकि जो आपका मोमेंट का यूनिट है वो न्यूटन मीटर्स है. सही है. सो यू नीड टू कन्वर्ट इट टू मीटर्स. ऑल राइट. सो दैट्स गोना बी 0.02. y जो है उसका मोमेंट कितना होगा? दैट्स गोइंग टू बी अगेन 20 इंटू 0.02. ऑल राइट, ठीक है जी. सो दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी 0.4 न्यूटन मीटर्स. ये भी 0.4 न्यूटन मीटर्स होगा. तो टोटल आपका
8 न्यूटन मीटर्स हो जाएगा. सो दोनों ऐड हो जाएंगे. सो बोथ द फोर्सेस एंड देयर मोमेंट्स आर गोना ऐड. The moment is increased by using a stronger magnet or a stronger magnetic field. State two other ways to increase the moment. What two other ways can we use? Same, वही है. पावर कैसे इंक्रीज करोगे? नहीं नहीं नहीं, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स ही तो बढ़ाना है. तो फोर्स कैसे बढ़ा सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके देख लिया हमने. कॉइल की लेंथ नहीं, कॉइल के टर्न्स. सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टर्न्स ऑफ द कॉइल. इंक्रीज द नंबर of turns. All right, so you're going to do what? You're going to increase the number of turns. अच्छा, increase the number of turns हो गया. फिर कनेक्शन टूट गया फॉर सम रीजन. नहीं, सॉफ्ट मैग्नेटिक कोर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. सो एक तो आपके पास, चलो ये इसको मैं सही करता हूँ. एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि डू व्हाट, सो एक आपके पास ऑप्शन ये है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स. द सेकेंड ऑप्शन दैट यू हैव इज टू इंक्रीज द करंट passing through the coil. Increase current passing through the coil. सही है, increase the current passing through the coil. All right, does that make sense to everyone? ये गाने clear है?